of the personalities to Personalities require. to be required. He's the that personality. Who knows the what the man is to be required? Yes. यार आप लोगों को मैं कहाँ दिखाऊं यार इसकी फोटो, जब जब आप ये बोलते हो मैं इसकी फोटो जूम करके देख रहा होता हूँ डेस्कटॉप पे। प्रिंट आउट लेके जैसे लंगूर का आया कटआउट वैसे कमरे में अरे लगा के काम रख। क्या किया क्या अभी तक लंगूर कटआउट या चोरी हो यार गया? पापा से पूछूंगा यार मैं। ये लो यार, आई हैव सेंट इट। तो अभी तो जनरल में थोड़े दिन तो रहेगी ये। पांडे लिंक भेजता रहता है तो ऊपर चली जाती है चीजें फिर। यार किमी एंटोनेली लिंक तो 18 मैं साल बहुत 6 महीने भेजता का हूँ है यार। और उसने पॉइंट स्कोर करे। मैक्स 17 साल 5 महीने का था जब उसने पॉइंट स्कोर कर दिए थे। ऐसे ही होता है भाई। कौन कर देगा वो आपको? मैक्स वर्स्टैपन भी तो 18 का हुआ करता था एक बार। Monty, are you a play? मोंटी एक बार बाहर गया हुआ है। Okay, okay, okay. पूछता हूँ, आने दे तो पूछ लेंगे तो आने देंगे। यार एक मिनट। हाँ वापस करना इनवाइट। क्या नो मेरिट है हिल ऑफ आयरन? हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, तो लगाओ फिर। हमेशा नो मेरिट ही था ये लोग। अच्छा, आप तो गांड फाड़ दो कि टैंक ले लेके, यार वो कैसे टैंक से खेलेगा बेचारा। भैया नहीं, मैंने कहा यार कुछ तो एडजस्ट होगा ना यार, रैंक वैंक इसकी इंडिविजुअल होगी, अलग होगी कुछ तो। यार ये गेम ने शुरुआत तो अच्छी करी थी, पर अब मेरे को लग रहा है एक साल के अंदर एक नया बैटलफील्ड ठीक आके इसकी गांड फाड़ जाएगा ये बेंचो। आगे बढ़ नहीं रहा है, वहां रुक गया एक सेकंड के लिए। ठीक एग्जैक्टली। है यार, कोई अर्जुन तो बात खेल नहीं, रहा है। टाइम दो यार। बैटलफील्ड के लीक काफी प्रॉमिसिंग आए, लेकिन लीक तो लीक हो गए हैं। हाँ यार, प्रॉमिसिंग तो क्या, बैटलफील्ड 3-4 वो भी ऊपर में बेस top गेम में निकाल दें तो भी कोई भाई तो वही तो प्रॉमिसिंग है कि वो वहां पे पहुंच जाए वापस तो ठीक है। टट्टी तो वो बाद में करते हैं शुरू। यार ये अब 2042 तो इन जनरली वैसा निकाला। टट्टी निकाला हो तो, हाँ मतलब क्योंकि बेस ही वैसा ही है वो तो। 50-60 साल के बंदे बैठे हैं। कम्युनिटी बोल रही पुराने गेम बहुत निकाल दिए, एक नया गेम हो जाए। तो जो फ्यूचर का गेम निकाल दिया। अब प्रेजेंट बोला है तो अब कुछ प्रेजेंट में भी ऐसा माइंड फक करेंगे प्रेजेंट के नाम पे। इनविजिबल डिस्ट्रक्शन तो प्रो दे दिया वापस भयंकर वाला। यार, फुल डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट है। और ऑब्वियसली मतलब उम्मीद तो यही है कि पहले वालों से बेटर। मैप चाहिए यार, मैप नहीं। ऑपरेटर इधर ही हाँ मैप दो यार, 2-3 नए अच्छे। ओह, चलो।
चलो भाई, आई कैच अप विद यू लेटर. Devanga, take care. ओके नन्ना, बाय. पूरे साल में 4 पॉइंट इस साल फर्स्ट प्लेस में 6. Nice. Enemy LAV, right here. Awesome. बढ़िया है यार, इसमें बैटरी टैंक वैंक सब है. दो गाड़ी एक टैंक है बीच में. पीछे LAV. Enemy tank. Found hostile tank. Found hostile LAV. Enemy LAV, right here. Watch it! Enemy LAV!
हाँ यार मैं मारने लग रहा हूँ आ रहा था। क्या ही करे ना यार अगर अनरैंक्ड है तो फिर तो कंगोल भी लगा देता हूँ आज।
क्या काफी चुदी हुई हालत में मिला है। अरे यार यहाँ लगा दिया था। पूरा टाइम लेके भी लेट में डाला है कुछ। कंट्रास्ट कितने का अरे तो सी पे तो रख लिया मेरे भाई। यार होली या यार 2 या 3 डोसीडोस और एक स्ट्रॉ वो K2 को छोड़ के सारा कुछ डन है यार। मैंने एक एक पौधा देखा यार और डन है मतलब डन है कि अभी तोड़ ले। और फिर तो कल या परसों में ही आ जा अगर तू आ सकता है तो। यार एक बार एक पानी और दे दे यार, फ्लश हो जाए ताकि एनपी दे के दिया वो से भी तो देखा निकल। देखा हाँ अभी यार तो एक बारी एक पानी। ऊपर भी दे दिया, थोड़ी मिट्टी विट्टी थी तो मैंने थोड़ा ऐसे भी दे दिया कि थोड़ा साफ सुफ हो जाए। ट्राई को देख लिए भर के हैं और पहला पार्ट ऑरेंज मतलब कोई एक लीफ पे पूरा ही ऑरेंज हो रखा है, फिर एक लीफ पूरी वाइट है, ऐसे है पर हो रखे हैं डाली। बट बुट देख लिए सारे ही डन है, एक आधे उसको छोड़ के। ऐसे ही। E1 E2 जा रहा हूँ। यार, ए मार पाओ तो देखो यार। यस E1 पे बीकन।
सीजन आ जा। आजा मेरे पे, आजा छत पे हूँ। ये गाना तो भी यहाँ रुको यार, E2 का बीकन हो। बंदा है। ये यार E2 ले गया। मोनोपोली हो गया। ले रहा हूँ E2 को। Yeah. मैं भी जूस खा भी लेंगे।
फोरेक्स फोरेक्स छक्का है तो यार पोस्ट भी नहीं है यार, जिनको जाट से रखा है बेड़ी को छोड़ रखा है, ली को यादव बता रखा है, चलो प्रॉब्लम ठीक पंजाब और नहीं और इनको नहीं
क्या करते रहते हो तुम? लाभ दे दे। आजा तुम। एक शॉट और मारते होंगे। They throw everything at you today, the weather, the safety cars, all those restarts you did, and you didn't make a single mistake, you lost people like this. I made a couple mistakes, but allowable ones just because of how tricky these conditions are. I mean, you can see how many पुलिस सर्वे का एक लिंक आ रखा है, उस पे डाल देते हैं कि सर ending their races very early on. किंग ऑफ ये किंग ऑफ हिल आयरन वाला People on the outside उसको सर don't राइड really करो, realize how रैंक tricky इसमें this चलाओ। a race like that is, especially when you're racing at देशी कराए भाई a bit of a margin. You can relax, you can get into a really nice rhythm, but like the last 3 laps, they were stressful. The start was fun. After that, I think I tried to stay with the McLarens, but yeah, like basically every other team, we just take too hard and we overheat our tires, and then the McLarens just take off. And yeah, give it my all. But then of course at one point they really just took off. I tried to just focus on my own race. But then of course the weather just started to play up again, and it was very difficult out there with the slicks when it started to rain. Yeah, we tried to push something else. It was आ रहा है about to मोटी work फिर out, लगा but yeah, I constantly Bong focused मार रहा on how the weather is moving in. But even if we would have pitted with them a lap later, or the lap that I pitted, it would have always been P2 anyway. You know? So it didn't really matter, but it was fun to try and do something different. Yeah, very pleased to come out and P3. Not an easy race for anyone, and just keeping it on the road was a handful in itself. But yeah, really happy with it. Super happy. You know, the team did a great job. I was happy also I managed, even though I did a couple of mistakes which costed me a bit of time, especially with the speed. But I have to say conditions were super tricky. But otherwise, really happy. The team guided me really well throughout the whole race. And yeah, now looking forward to China. It feels a bit mellow in some ways because it was such a crazy race. I'm just trying to get my head around it. Fantastic for the team, first of all. Great strategy. I have to say Charles, our strategist, did a great job. I didn't agree with his call to put me in the pits. The track was going dry in sector 1 and 2 when it came out, but it was the right call, and just really happy for everyone. It was one of those races. It was the right call, and just really happy for everyone.
Just had to come back and keep it clean and so we didn't see that coming for the first half of the race. It wasn't looking too good, but then things got a bit obviously a bit more entertaining towards the end. We made some good calls. I don't know, people were struggling obviously, and we picked up the pieces, and but where they would have mattered. So very happy. big part of the race, we thought P5 was secured, and then obviously the rain arrived, and then everything turned. The first one to blame is the mistake I done. We lost 3 off, very difficult to recover. We overtook 1 or 2 guys on track, but then we were a bit too late for the pit stop, and then we lost a few other positions. So it's been a tricky day. Obviously a mistake for myself, but I think for that the consequences it did was a little bit unfortunate. So obviously I'm going to go myself to blame. Tried to push too much in those conditions, but 56 and 3/4 laps were very strong. At least I got 1 point, but did I get a point? I don't remember. Didn't get a point, so but overall, not what I was hoping for. But there was so much to get accustomed to, get used to, with all the switch settings changes that were thrown at you, and then just the balance of the car was really very, very tricky, really, really tricky today. So definitely, I think we can improve that in the next race, hopefully, and get the car in a sweeter spot, because I think there's a lot more potential in the car than what we were able to extract today. We thought we were doing the right choices by staying out in conditions. So I think we were running top 3, like in these extra laps we were doing, and I could see pretty much every 3-4 corners were cut off. So I really thought, okay, as long as we keep it on in between the white lines, we'll be fine. I managed to overtake Yuki, and I've done whatever I could done, and just weather didn't come towards us, and the timing and everything, and suddenly I dropped to P11 after safety car, after I rejoined to the track. So timing and everything was didn't go towards us, and definitely very, very shame that we didn't score points. It's really the performance, that we missed out on this race. If we had a little bit more, we could have been in the mix for points. The cars were fighting in front. I was just there. There was close position for me to get inside the top 10. I just couldn't keep up, unfortunately. I was quite happy with my performance. I felt like I executed pretty well. There were a few things where we lost a bit of time, but when we're not fighting for the points, that's really the time to try things, and it didn't work out. We took a chance, to be honest, hoping at least half the track would stay dry. We knew that sector 3 was bad, but we thought that sector 1 would stay a little bit drier, so we carried on, and unfortunately it was bucketing down with rain. So at that point, to be honest, I backed out of sort of pushing at that point because it was so wet. I was just trying to stay on track, but obviously not ideal. Before the incident was going very well with what we had. We got some unlucky things, like when we went to the pits and we went back, we had a safety car coming in just in front of me, so I could, when I was able to unlap myself, I couldn't get to the pack because I just had 1 lap to 1 lap. So basically I restarted the race very much in the back. Tried to recover a bit there, unfortunately touched the curb and ended up in the wall. It's a shame. I'm sorry for the team, and The incident came from nowhere, to be honest. I was a bit surprised about losing the car. I was not wider than any other lap. I just found a lot of gravel stuck there in the middle of the circuit, and then I spun. So very costly incident. But I don't know really what to do different. Just try to analyze it a little bit better. I think it's a little bit unlucky incident, but Obviously not the way you want to start the year, and a bit of a unfortunate situation, but we move on. Not the first race we wanted, but at the same time,
I'm quick, I feel comfortable in the car, and now we need to keep the year started. You didn't really understand what happened, to be honest, until I got back. Just looking at it, whether it was a white line, Inter's not at the temperature, it just seemed as I upshifted the fourth, I lost the car. So, yeah, lesson learned, making sure that I spend some time with the boys to understand how I make sure it doesn't happen again. Yeah, you know, we have a race weekend already next week in Shanghai, so we're going to regroup, keep our heads high. We've had a strong package this weekend, very strong yesterday afternoon, so we need to keep strong and bounce back next weekend. Usually I take it step by step and working on having the best outlap possible for the restart. Early in the lap we try to walk those tires and I overdid it. Like, it's the tiniest mistake you can do, and the car is unsavable, you're just a passenger and it feels terrible. Bichare. क्या ही कलर है मैम क्या क्या छोड़ के क्या क्या हो गया? यार 2-3 डोसी और एक K2. ओके जैक्स बढ़िया है. हाँ? How are Jacks do? Jacks will do fine. Nice. जैक्स बढ़िया चल रहा है. मैं पानी वानी सबको दे दिया, शावर कर दिया था. थोड़ा लाइट ही पानी दिया क्योंकि कल का गीला ही पड़ा हुआ था ऐसा, क्योंकि आज ओवरकास्ट था ऐसा, उड़ा नहीं. या और कल भी शाम को ही दिया था, कितना ही वो था. हाँ ठीक है, मैं वो दे दिया. मैंने कहा फिर भी मैं जो वापस गीली तो कर ही दो मिट्टी. तो ओके 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 ओके. अब ये जो है जो मुझे ऑलमोस्ट 15 प्लान्स डन है. 18. अच्छा ओके 21 है. ओ या जो एक बड़ा K2 है. अच्छा एक तो जैक है उसमें. हाँ एक जैक रखा है. बाकी उसके अलावा 21 है. भैया बड़ा K2. हाँ जो इधर लेफ्ट के जैक के पास है. नहीं उधर उस कोने में स्ट्रॉबेरी के बगल में जो है. ओके हाँ हाँ वो नहीं हुआ. और कॉर्नर वाला हो गया. हाँ कॉर्नर वाला जो छोटा शॉर्ट और बुशी है वो हो गया. ओके 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 ओके. रंडियों के ढाबे पे, गांड माराने के ढाबे पे आ जाओ. तो या तो जो नया एरिया बना रहे हैं उसके अंदर इस फ्रेम से हैंगर या कुछ टांग टूंग के और सुखाने का जुगाड़ बना के बड़े एरिया में सुखा देते हैं. विच बड़ा एरिया? द मेन बड़ा एरिया अपना. अच्छा उधर ग्रो रूम. हाँ या एक महीना तो है नहीं. तो सुखाना क्या वो है ही अपने. रॉड तो लगी हुई है ही, वो वाली रॉड है ही ड्रेसिंग वाली तेरी हैंगर टांगने वाली. उसी से हो जाएगा काम. उससे या तो कुछ हैंगर टांग लेंगे उस पे. हैंगर टांग के और उसके ऊपर तो हो ही रहा है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि लाइटें अभी नहीं लगाएं, सुखा ले पहले.
यार सुखाना भी क्या 3-4 दिन का है, 3-4-5 दिन। हाँ पर है सुखाना होता नहीं तो Of लाइटें course, ऊपर लगा से के, सूखे या हुए- तो लाइटें लगा के सुखा ले। वही कह रहा हूँ, लाइटों से कुछ एक्सटेंड कर लेंगे, उसका फ्रेम में जगह तो है ही। हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। 2 तार बांध देंगे कायदे से तो दोनों एंड पे, तो भी हो गया या, बेंच या, तो या। सिंपल झूला एक बना लंबा दिया है तार, क्या? पैनल वाले लाइन में जगह है ही, लेफ्ट राइट पे 2-2 हुक बना के टांग दिया बस। या बथेरे आ जाएंगे। ठीक है, ट्यूसडे या वेंसडे वी डू इट। लाइटों के लिए क्या चाहिए? क्लैंप कब आ रहा है? थर्सडे। हाँ। यार तभी मैं कह रहा हूँ तू कल परसों आ जा, क्योंकि प्लांट्स डन है यार। इस बैंड के जोंगे को भी बुलाते हैं उस दिन, मादर चौथ की इसकी लगवाओ ट्रिक्स। लाइट तो भले ही चाहे तू और मैं टांग लेंगे विद द प्रॉपर टूल्स, इस मादर चौथ की जरूरत है पिलेंट्सों को काट के और कराने में। आरपी को भी बुलाओ उस दिन, आरपी विल फील हैप्पी। आरपी को भी बुला सकते हैं। यार देखो अब तो काटने में भी ये चाहिए और फिर उसके बाद सुखाने में, ट्रिमिंग में भी चाहिए अगर होंगे तो। सब लोगों में हेल्प ही हेल्प चाहिए, और मेरे को बाकी तो पता नहीं, तू चाहिए पॉली, हाँ क्योंकि मैं नहीं यार करूँगा, या मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है भाई। मैं अब से कुछ भी नहीं करूँगा, तू समझ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा का तो मतलब है मैं वो ही जो कर लूँ टर्मिनेट हो प्लान, गए बेंचो वो भी नहीं निकालूंगा, वो भी कब तक फेंकूंगा अगर 2-3 दिन में तूने इनको नहीं हिलाया तो। भैया भैया यार वो तो बड़े टाइट बेंचो, मतलब टचवुड बढ़िया बीज है बेंचो, सबकी पूंछें निकली हुई थी भाई, ओके। मतलब सब इजेक्ट हो गई, वो पूंछ जो इजेक्ट होती है ना, वो कट 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 वो एक छोटा सा सूंडी सी निकली हुई है सारियों की, मतलब ऑलमोस्ट सारे बीज की निकल गई। अब बाकी जो निकालेंगे वो निकालेंगे। इनके 20 बीज भेजे उसने, उसमें से मेरे को अच्छे खासे 10 पौधे दिख रहे हैं। पापा कल परसों में बोल रहे हैं मैं 15 ग्रो बैग ले आऊंगा, घर पे 5 पड़े हैं। अरे अब और फ्री एक हो गए वर्मी अपने चाहिए पापा। ग्रो बैग, तो फ्री हो जाएंगे अब अपने वापस। अरे ग्रो बैग क्या, सॉरी, अरे ग्रो बैग बोल रहा हूँ, मट्टी मट्टी बैग। 20 सैंड बैग्स ले आएंगे डैड, 15 सॉरी, ग्रो बैग तो हो गए फ्री। माँ चुदाए हरे में ही नीचे कर देंगे, उसमें ही 6 रखे, सब सेम है। या सीधा गोदन में कर देंगे। नहीं सीधा गोदन तो नहीं कर रहे यार, ऐसे मत कर। अंकल ने कर दिया ऊपर, अपन क्यों नहीं कर सकते? यार वो गोदन के पैकेट कट के और उसमें आधे में है, वो गोदन पूरा तो लेगा ही नहीं यार, मतलब अपन न्यूट्रिशन जांच कर नहीं दे पाएंगे। हाँ यार बस हो रही है, ठीक है। अंदर जो डले आए हैं, कैसा आया है वो वैसा ही पड़ा रह जाएगा, वो सब भी तो है ना यार। ठीक है। एक बैग में उल्टा करना, क्यों कर देंगे, मैं और पोटे ऑन कर दूंगा, उसकी टेंशन मत ले, मिट्टी वाले काम में सारे कर दूंगा। स्पेसिफिक था कुछ कामों में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है भाई, व्यवहार का बात कर ले।